Hi everyone, welcome to Korean Express YouTube channel. In this video, I am going to share with you the benefits of learning Korean language. In the previous video, I shared with you the benefits of learning any foreign language, and now we will talk particularly about learning Korean language. Alright, so this video has been separated into 3 parts. So let's see what are these 3 parts. The first part is the answer to this question that has been shown on your screen. Why Indians should prefer learning Korean language over other foreign languages? Okay, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, बट वाई शुड यू प्रिफर कोरियन इफ यू आर एन इंडियन? ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी. इन द नेक्स्ट पार्ट we are going to discuss the various job opportunities after learning Korean language. There are many job offers, opportunities you can have after learning Korean language. तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, and then we will analyze the scope for personal development after learning this language. Okay, so let's start. All right, let's see the similarities between Korean language and various other Indian languages that makes it easier for us to learn Korean language. Okay, so as I said, Korean language learn करना Indians के लिए easy है when compared to other English speaking people, because जो Korean language structure है, जो sentence word order है Korean language का, वो बहुत सिमिलर है टू हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज. ऑलराइट, ऑल्सो द इंडियन कल्चर एंड द कोरियन कल्चर, दे आर वेरी सिमिलर इन मेनी एस्पेक्ट्स. लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनोरिफिक्स इज प्रैक्टिस्ड इन लैंग्वेजेस ऑफ बोथ द कंट्रीज. मतलब इफ यू आर स्पीकिंग टू अ पर्सन, देन डिपेंडिंग ऑन दैट पर्सन's एज और सीनियरिटी इन रिलेशन टू योर्स, you must speak differently to that person. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी में जब अपने बड़ों से या किसी भी रिस्पेक्टफुल पर्सन से बात करते हैं तो हम आप करके बोलते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं. वहीं जब हम अपने बराबर वालों से या एज में जो हमसे छोटे हैं उनसे बात करते हैं तो हम तुम या तू करके बात करते हैं और हमारा बोलने का तरीका बहुत फ्रेंडली होता है. तो ये सेम चीज़ कोरियन लैंग्वेज में भी होती है. दैट इज़, आप किस इंसान से बात कर रहे हो, वो आपसे एल्डर हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, या आपसे छोटे हैं, या आपके फ्रेंड हैं, उस अकॉर्डिंग आपकी जो बोलने का तरीका है वो चेंज होता है. ये हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में भी होता है और ये कोरियन लैंग्वेज में भी होता है. तो ये कोरियन लैंग्वेज को और ईजी बनाती है हमारे लिए जब हम सीखने के बारे में सोचते हैं. ओके, वेयर एज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल to learn Korean language because of the difference in the sentence structures, in grammatical rules. Also in English you can see there is no such concept of honorifics. वो हर किसी को you करके बोलते हैं in English language. So it is a bit difficult for them to learn Korean language as compared to Indians. Okay, so इसलिए Indians should prefer learning Korean language if you are thinking of learning any foreign language. Now let's see the various job opportunities we have after learning Korean language. Now with the rise of South Korean companies all around the world such as Samsung and LG and Hyundai and Kia Motors and many more, there is an increasing demand of professionals who can communicate in Korean. Learning Korean can make you a valuable asset in these companies, opening up job opportunities in various sectors. Alright, we know that these South Korean companies and many other South Korean companies, they are operating their business all around the world. So they definitely require professionals who can communicate in Korean and at the same time in the native language of that country in which these companies are running their business. So various job opportunities open up for you if you want to work in these companies. Alright,
Now, another job benefit that we can have is many international or multinational companies have established their presence in South Korea. Now, by learning Korean, you can bridge the language barrier and effectively communicate with the Korean counterparts, enhancing business relationships and facilitating smoother collaborations. So, अगर आप कोरियन लैंग्वेज सीखते हैं और आप कोरियन में सेटल होना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है. ऑलराइट, इफ इन फ्यूचर यू वांट टू सेटल इन साउथ कोरिया, सो इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि साउथ कोरिया इज़ अ हब of various international and multinational companies, and these companies, they require experts who can communicate effectively in Korean language so that it becomes easier for collaboration with their Korean counterparts. So if you want to settle in Korea, you should know Korean language if you want to settle and work there in any international or multinational company. Now let's see another job opportunity we can have after learning Korean language. What you can do is you can become a Korean language translator and interpreter. Okay, after becoming a Korean language translator or an interpreter, various job opportunities open up in front of you in different industries. For example, as the number of Korean tourists visiting India increases, there is a growing demand for professionals in the tourism and hospitality industry who can cater to Korean guests. By being proficient in Korean, you can work as a tour guide or a travel consultant, providing a personalized and comfortable experience to Korean travelers. Alright, तो अगर आप Korean language सीख जाते हैं, you can become a Korean language translator or an interpreter, and you can become a travel consultant after that in the tourism or hospitality industry. तो जितने भी Korean tourist हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हो टू हैव अ कंफर्टेबल एंड मोर अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग इन इंडिया. ओके, एंड इट्स एन अमेजिंग जॉब, एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, इफ़ यू लाइक ट्रैवलिंग योर सेल्फ, तो आपके लिए तो ये बहुत कमाल की जॉब है. ऑलराइट, ऑल्सो यू कैन सी देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ कोरियन ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री for translating various Korean songs, that is K-pop, and for providing subtitles for Korean dramas and movies, that is doing the job of a subtitler. So if you are a language expert, if you know how to translate Korean language in Hindi or in English, you can do the job of a subtitler. It's an amazing job, so you can think of it also. So being a Korean language translator or an interpreter, you have many job opportunities in different sectors. All right, now let's see another opportunity. ये उनके लिए है जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या जो लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करना चाहते हैं. Fluency in Korean can be an advantage for various government jobs and positions related to international relations. It can make you a suitable candidate for roles in embassies or trade organizations and government agencies involved in promoting bilateral relations between India and South Korea. Alright, so if you want to do a government job, तो जितनी भी embassies होती हैं, foreign embassies, Indian embassies जो हैं, वहाँ पे there is a role of a translator or an interpreter and various other roles also as a job perspective. So you can work over there, you can work in various international trade organizations. If you become fluent in Korean, so it definitely gives you an edge to work in organizations or in government agencies that work in promoting the bilateral relations between India and South Korea. So it definitely gives you a very amazing job, a well settled job if you are fluent in Korean and you want to do a government job at the same time. Okay, all right, now let's see another opportunity that we can have. ये बहुत ही पॉपुलर और एक कहते हैं ना एकदम satisfactory job जो होती है in the education sector that you can have. Korean language learning is gaining popularity in India, we all know,
and many educational institutions are offering Korean language courses. So if you become proficient in Korean, what you can do is you can work as a Korean language teacher or instructor, either in schools or in private language institute, depends on you. So this can be a rewarding career option, especially as the demand of Korean language education continues to grow. We all know ये demand खत्म नहीं होने वाली है और ये अभी grow और करेगी. So अगर आप कोरियन लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो जाते हो, यू कैन बिकम अ टीचर और एन इंस्ट्रक्टर इन कोरियन लैंग्वेज. बहुत सारी स्कूल्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं दैट आर ऑफरिंग अ जॉब ऑफ कोरियन टीचर, क्योंकि ये एक ऐसी डिमांड है कि कोरियन पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, पढ़ाने वाले कम हैं इन इंडिया स्पेशली. So if you want to work in the education sector and at the same time you are a Korean language expert, then the job of a teacher or the job of a Korean language instructor, it is an amazing job. It is a very rewarding career option. Okay? All right. Now let's see another job opportunity. This is a very unique and an in-demand job sector. Freelancing and remote work opportunities. Now, learning Korean can open doors to remote work and freelance opportunities. You can offer language services such as translation, interpretation, content writing, or even online language tutoring to clients in India or any other country. It is like a global job. Okay. With the advancements in technology and the increasing need for cross-cultural communication, freelancing in the Korean language domain can provide flexibility and a diverse range of projects. तो जिसे हम कहते हैं घर बैठ के जॉब करना, वो आप कर सकते हो बिकॉज इतने एडवांसमेंट्स हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में दैट यू कैन प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज इन वेरियस सेक्टर्स. जैसा मैंने बताया, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, कंटेंट राइटिंग, ऑनलाइन लैंग्वेज ट्यूटरिंग, और इंडिया में ही नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो ये एक बहुत ही कमाल की जॉब है. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एल्स एट द सेम टाइम while doing this freelancing job, so it provides you flexibility and it gives you a diverse range of projects that you can do online while providing various services. So हमने देखा कि there are various job opportunities in different sectors that open up in front of you after learning Korean language, after you become a Korean language expert. Okay, now we'll see how Korean language can help in our personal development. Now, if you are planning to study abroad, I would say prefer South Korea. Now, why? Let's see. South Korea offers a blend of academic excellence, cultural richness, and career opportunities that make it an attractive destination for students seeking to study abroad. South Korea is renowned for its high quality education system. South Korean universities, they are the top ranked universities in the world. The South Korean government and वहाँ की जो universities हैं, वहाँ के private organizations, they provide various scholarships and financial support for international students. So it becomes very convenient if you want to study in South Korea. Okay, so if you're planning to go there and continue your higher studies, then you should definitely know Korean language, at least the beginner level, because the communication language there is Korean. Even यूनिवर्सिटी के मेल्स, नोटिसेस और जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको कोरियन लैंग्वेज में ही मिलेगी. सो यू शुड नो कोरियन लैंग्वेज. आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट द बेसिक लेवल. ओके, तो अगर आप फॉरेन जाके पढ़ाई करना चाहते हैं आगे की, तो साउथ कोरिया ऑफर्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही कमाल की यूनिवर्सिटीज़ हैं. दे आर टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड. वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत फ्रेंडली है. सो यू वोंट फील लाइक
अलग अलग सा फील होना, discriminated फील होना. You won't feel like that. And the government and various organizations, they also offer scholarships and financial support. जो साउथ कोरियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे गिव मोर प्रेफरेंस टू स्टूडेंट्स हु नो कोरियन लैंग्वेज, जिन्होंने टॉपिक के डिफरेंट लेवल्स क्लियर करे हों या जिन्हें बेसिक कोरियन आती हो, टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन. तो उन लोगों को थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है. तो इफ़ यू वांट टू स्टडी इन साउथ कोरिया, you should know Korean language, at least the beginner level. Okay, now let's move forward. Alright, if you are a K-pop fan or a K-drama fan and you watch K-dramas with the help of subtitles and you listen to K-pop and understand the meaning of the songs with the help of English translations, then you are missing a lot. Believe me, because there are many expressions, many phrases and words in Korean language that cannot be conveyed properly in English language, and they lose their meaning, their emotion, their essence when we translate them. So if you really want to understand the Korean dramas, K-pop, the Korean movies, then you should at least know the basics of Korean language. क्योंकि आप अगर सबटाइटल्स की हेल्प से, आप अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन की हेल्प से ड्रामास देखते हो, म्यूज़िक सुनते हो कोरियन लैंग्वेज में, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो. बिकॉज कोरियन लैंग्वेज को इंग्लिश में प्रॉपरली कन्वे करना पॉसिबल नहीं है. बहुत कुछ मिस हो जाता है. बहुत ऐसे इमोशंस हैं जो आप कन्वे नहीं कर सकते हो, जो कोरियन लैंग्वेज में ही कन्वे किए जा सकते हैं. ऑलराइट, सो इफ़ यू आर रियली अ ट्रू फैन, आई वुड से कि आपको थोड़ी बहुत कोरियन लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए इफ़ यू वांट टू रियली एंजॉय द एसेंस ऑफ द कोरियन ड्रामाज एंड द कोरियन म्यूजिक. ऑल राइट, सो डेफिनेटली कोरियन इज़ अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज ऑफ अ ब्यूटिफुल कंट्री. साउथ कोरिया एक बहुत ही स्पार्कलिंग कंट्री है, बहुत ही कमाल की कंट्री है व्हेन इट कम्स टू नेचुरल ब्यूटी और its culture or the technological advancements that are there. So everything about South Korea is amazing. So I would suggest that you should visit this country at least once in your life. And if you're planning for a trip to South Korea or you want to settle there in future, then you should at least know the basics of Korean language. Okay, so in this video we learned so much about the benefits of Korean language, whether professional or personal, and why Indians should study Korean language if they want to study any foreign language. Okay, तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप एक इंडियन हैं और आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आप कोरियन लैंग्वेज सीखने के बारे में सोचिए, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कोरियन लैंग्वेज सीखने के. एक भी ऐसा मुझे फ्लॉ नज़र नहीं आता कि आप कोरियन सीखने के बाद इट वोंट हेल्प यू इन एनी वे, आइदर पर्सनल और प्रोफेशनल. ओके, इट इज़ डेफिनेटली बेनिफिशियल टू लर्न कोरियन लैंग्वेज. इट इज़ एन अमेजिंग लैंग्वेज, बहुत ही प्रैक्टिकल लैंग्वेज है और हमारी हिंदी लैंग्वेज जो है और वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उनसे बहुत रिलेट करती है. एंड इन फैक्ट द कोरियन कल्चर इज़ ऑल्सो रिलेटेबल विद आवर इंडियन कल्चर. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.